Hello everyone. In this video, we learn what is inline and block elements in HTML. Okay, तो शुरू करते हैं. So we are in this VS Code. Let me first create one file, inline and block.html. Okay, then create one boilerplate, Shift+1. So what is inline element? Okay, inline element are those elements which starts in the same line. Okay, let me show you. Suppose I use one B tag. B is used for bold your text. My name is, then one more B tag, Hexnbit. Okay, let me run this file. Okay, my name is in the one line and Hexnbit is on the same line, but block elements are start from the new line. Let me show you. Suppose I use one h1 tag. In h1 I write hello, and in h2 I write world, then Control S to save. So hello in the one line and world in the next line. Okay, suppose if I write h3 in hello, and after h3 I write h4 world, Control S to save, तब भी हेलो एक अलग लाइन में, वर्ल्ड एक अलग लाइन में, क्योंकि हेडिंग टैग्स ब्लॉक एलिमेंट होते हैं एंड इनलाइन वो एलिमेंट होते हैं जो सेम लाइन से स्टार्ट होते हैं. ओके, एंड ब्लॉक अलग अलग लाइन से स्टार्ट होते हैं. ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक यू.